covering all the 16 functional groups. Okay. Reconfirming, am I audible? Yes, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now, Janita, let us start. So, our 16 functional groups are there total. Okay. And there are 16 functional groups. Suffixes we have to remember. All the 16 functional groups के कुछ नाम हैं, उन नामों को हमें याद कर लेना है. And I will be putting their names here again. Okay. So starting from, we can start from the alkane. So I'm writing each and every functional group listing here. Alkane, yes, alkene, alkyne. So these three functional groups are basic functional groups, which is a part of any organic molecule. कोई भी organic molecule जो होता है, वो इन तीनों में से एक को तो कैरी करेगा, कंपल्सरी कैरी करेगा. या तो एन को कैरी करेगा, या तो इन को करेगा, या तो आइन को करेगा. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है आज तक की हिस्ट्री में कि जिसमें ये ना हो. ओके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. देन आई गेव यू अल्कोहल एंड हैलाइड. मैं हमेशा इन दोनों को साथ में ही डिस्कस करता हूँ, इवन 12th में भी. अल्कोहल एंड हैलाइड्स, दे आर अकरिंग टुगेदर. ओके, अल्कोहल, हैलाइड्स. उसके बाद हमारे पास 7 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो CO ग्रुप कैरी करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप. ओके, इन द क्लासरूम व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज हैंड. ओके, सो वी विल डिस्कस. हमारे पास 7 ग्रुप्स है. 7 ग्रुप्स के नाम बताए तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे. तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेन है. उसके बाद एसिड, क्लोराइड एंड एमाइड. So let us take acid, chloride and amide. उसके बाद हमारे पास एस्टर भी है and acid anhydride भी है. Acid anhydride. Okay. So actually these 4 groups are called as derivatives. These are the main and these 4 are derivatives of this carboxylic acids. तो ये 7 groups 1 2 3 4 5 6 7 ये CO वाले ग्रुप्स. देन वी हैव नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स. नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स में हमारे पास अमाइन, नाइट्राइल. ओके, अमाइन हो गया, नाइट्राइल हो गया, नाइट्रो, ये नाइट्रो. और एक और ग्रुप है जो अपार्ट फ्रॉम दिस है, दैट इज ईथर. सो आई हैव कैटेगराइज्ड, आई हैव मेड वन सेगमेंट. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, हेलो, 7 ग्रुप्स, नाइट्रोजन एंड ईथर. इन सभी के रिप्रेजेंटेशन हमें पता होने चाहिए. व्हाट आर, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट. जब पेपर पे आएंगे तो ये कैसे लगेंगे. तो अल्केन का मतलब है कि कार्बन के पास ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सिंगल है. अल्कीन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. माने कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन प्लेस, ऐसा एक प्लेस तो आपके पास होना चाहिए कि जहाँ पे कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड. क्या हो, डबल बॉन्ड. अल्काइन, एटलीस्ट वन प्लेस शुड बी लाइक दैट कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. अल्कोहल का मतलब है, यू कैन राइट ROH. व्हाट इज ROH? आर का मतलब क्या है, एनी अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, आइसोप्रोपाइल यू कैन टेक, बट एनी अल्काइल ग्रुप इज देयर. हैलाइड में क्या आएगा, RX. एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड O एंड H. तो लास्ट में जो पढ़ने का तरीका है उसको बोलते हैं हम CHO. तो बोलते हैं हम CHO. ओके, देन वी हैव कीटोन. तो RCOR. कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH. एसिड, क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl. अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2. एस्टर RC डबल बॉन्ड OR. acid anhydride RC double bond O again C double bond O and R. So they are the CO group containing compounds. Okay, all of them are CO group
containing compounds. Is that okay, everybody? Okay. Now, amines. It is called as R. Either it is NH2, either it is NH. अगर मैं NH लिखता हूँ तो मुझे 2 R लगाने पड़ेंगे, और अगर मैं 3 लगा लेता हूँ तो that would be R triple R N. So amines में 3 categories होती है: primary amine, secondary amine and tertiary amine. This can be called as primary amine, this is secondary, and this is tertiary amine. Understood, everybody? Okay. Then we have nitrile, that is RCN. We have nitro, RNO2. We have ether, ROR. वेरी केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ईथर एंड कीटोन में हमेशा जनरली मिस्टेक कराई जाती है. कीटोन में RCOR है, ईथर में ROR है. अंडरस्टूड? तो ये हमारे टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप जो हमारे यूज में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is not limited to only 16 groups, okay? But they are the majorly available in all surroundings. तो इसको हम पढ़ते हैं, नेमिंग करते हैं. Now we have उनके suffixes, proper suffixes, okay? So इसका suffix है in, sorry, it's a in, then in, correct? इसमें suffix आएगा all, इसमें प्रीफिक्स आएगा, so I would add prefix word prefix, and prefix लिखने के बाद we will write hello. Hello is the prefix. This is suffix al, this is on, this is oic acid, this is acid chloride में oil halide होता है. क्या होता है? Oil halide. So we will write oil halide. Then this is amide, this is एस्टर है तो उसको अल्काइल अल्केनोएट बोलते हैं, या तो हम ओएट बोल दे, टेम्पररी क्या बोले, ओएट, अदरवाइज इट इज अल्काइल अल्केनोएट. तो अल्काइल, अल्काइल माने कि उसके आगे लगेगा एंड ओएट पीछे लगेगा. सो एक्चुअली सफिक्स तो ओएट, करेक्ट. इसमें एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड, इसमें सफिक्स में लगेगा अमाइन, जिसमें सफिक्स आएगा नाइट्राइल, यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा आगे. तो प्रीफिक्स है नाइट्रो, प्रीफिक्स है नाइट्रो, एंड दिस इज ईथर. सो ईथर इज अगेन प्रीफिक्स, उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी. So these are the 16 functional groups we are going to learn today, applying all the basic rules till हमने जितने भी बेसिक रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको सेट करना है. जो भी बेसिक रूल पढ़े गए वो सारे के सारे बेसिक रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. The only thing you need to change, that is its suffix value. Okay, is that understood, everybody? Okay. तो ये हमें याद है, correct? That is how we are going. Now, last time, the last topic we have understood, that is cyclic compounds. Okay. So we have given several cyclic compounds to understand. Okay. Now we are starting with the basics. Alcohol, क्योंकि alkane, alkene, alkyne तो हमने already अंदर में include कर लिया है. So आज हमारा channel क्या है? What are we going to study? Number 1, we'll add every category in our knowledge. Number 1, we'll add every category in our knowledge. Number 1. Second thing, we will add multifunctional group, polyfunctional group compounds. कि एक ही कंपाउंड में हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स है, तब जाके कैसे नेमिंग करेंगे कि इसको आप प्रायोरिटी मानोगे कि इसको प्रायोरिटी नहीं मानोगे. ओके, दैट इज सेकंड पॉइंट वी हैव टू गो. ओके, एंड उसके सफिशिएंट एग्जांपल्स दे ताकि हमें समझ में आए कि कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो हो जाए. एंड थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टार्ट करना है. ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स माने कि बेंजेनोइड्स, बेंजेनोइड्स के बारे में डिस्कस करें. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, so let us start with the alcohols. Give title, functional group alcohol. Am I audible to online students, and do you understand everything whatever we are discussing? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
अल्कोहल्स, अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होगा ROH. I have already given you IUPAC practice booklet, okay, that is having sufficient examples to solve. So you can solve them all, in which bond line formulas are also there, condensed formula are also there. So that booklet is a key. Keep on practicing that booklet. That is very important. Okay. Keep on practicing it every 10 days. You have to visit the booklet and go through. Okay. And that is the key. So alcohol को हम ROH पढ़ते हैं. उसका suffix value क्या है everybody? All. Now it is very easy to identify this compound. So whenever in our carbon compound any alcoholic group is present, the OH is present, then we can discuss it as a all. नंबरिंग जब हमें करना होगा तो हमें उस साइड से करना होगा कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है. सो इट इज कॉमन रूल, एक्सेप्ट जहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है उनको छोड़ के सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स में हमें नंबरिंग उसको प्रायोरिटी देके करना पड़ेगा कि जहाँ पे उसकी ऑल की या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नियरेस्ट मोस्ट आ जाए. कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ ऐसे ग्रुप्स है यहाँ पे कि जिनसे ही नंबरिंग स्टार्ट होता है, बट कुछ ऐसे ग्रुप भी है कि जिनको नियर रख के नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है. तो जिनसे ही नंबरिंग स्टार्ट होता है वो वाले ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यू कैन टेक एल्डिहाइड. जिनसे नंबरिंग स्टार्ट होता है उसका कार्बन माने के पहला कार्बन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, दे आर द मेन कंपाउंड कि जहां से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं. बट in this case you can start numbering like this 1 2 3. okay, one, what is the root word here? Prop. So सबसे पहले ये prop है. prop के 1 के ऊपर क्या है? all. अब prop और all के बीच में हमें एक चीज लगानी है, that is what? a. क्या लगाना होगा? a. अगर मैं आपको secondary prefix, primary prefix, root word, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स वाला रूल याद करवाऊं तो उसमें ऐसा था कि दिस कुड बी द ब्रांच, दिस इज स्पेसिफिक प्राइमरी प्रीफिक्स इंक्लूड्स साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो. ओके, दे आर द कैटेगरी. रूट वर्ड्स आर दोज लाइक मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन डेक. ओके, प्राइमरी सफिक्सेस आर द एन, इन एंड आइन. तो इस पोजीशन पे एन या तो इन या तो आइन का होना कंपलसरी है. ओके, और यहाँ पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स. तो यहाँ पे जैसे ऑल है तो मैंने रूट वर्ड चूज कर लिया, मैंने ये चूज कर लिया. व्हाट कैन आई सिलेक्ट आउट ऑफ दिस? एन, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है. ओके, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है. तो इसका नाम आएगा प्रॉप, फिर एन प्लस ऑल. प्रॉप एन ऑल. बट इट इज वेरी नेसेसरी कि ऑल की पोजीशन को डिक्टेट किया जाए. तो ऑल की पोजीशन को क्या बोलेंगे हम? वन ऑल. नाउ you have to write fully, that is it is called as prop in propane one all. Now you have seen that कि हमने ये वाला ई जो है ना वो ड्रॉप कर दिया. तो जब भी कोई एक ग्रामेटिकल रूल है, ओके, जब भी कोई सफिक्स होता है उसमें वॉवेल्स होता है फर्स्ट लेटर, तो आगे वाले ई को ड्रॉप किए के हम लिखते हैं. तो प्रोपेनॉल. So propane one all is the name. Okay. Similarly, let us take another compound CH3, CHOH, CH3. You must and you can name this compound. Yes, numbering किस साइड से करेंगे? कोई भी साइड से कर लेंगे. You have to find the longest chain one. It's a propane to all. Speak like this: propane to all. Make a pause in between initially. Propane to all. So prop भी आ गया, in भी आ गया, position भी आ गया, all भी आ गया. Correct? Like that. So keep on writing along with me. Keep on writing along with me. Solve with me. Okay. So propane to all.
We can use bond line formula to go faster. We can use bond line formulas to go faster. Okay, in this formula, you must start numbering from the ये आपका right है, यहाँ पे right लगी, यहाँ पे left लगी, right side या left side, right side. So it's very easy. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane to all. Yes, it's a pentane to all. Okay. If it contains 2 hydroxyl group, 2 alls, that should be spoken as a diol. That is called as diol. So numbering can be started from the end where it is closer. Yes, जिसको आता है बेटा raise hand कर दे. अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं आपसे सुनूं, you just raise hand. Okay? Yes, Aman. Hexane 2,4-diol. Very good. Okay, understood? So that way we will go. So hexane 2,4-diol. Okay, I am giving you 3 more structures to solve by yourself. Okay, and then I will be adding later on. I am little confident that you know the rule, so उसके accordingly हम चल रहे हैं. Online students, you can also give names. You can write in the chat box the names of compounds. Okay. Okay, sir. So yes. Ideally, the IUPAC structure solving time is 15 seconds each structure. So within 15 seconds, you have to get it done. Good. Done, everybody? Yes, sir. Okay. Now, Manav, you tell me the name of this molecule. Butane 2,3-diol. So can you speak with the pause? Can you speak with little more pauses? Can you speak with exact pauses? इनको pause बोलते हैं. Okay. Diol. Butane 2,3-diol. That is a pause. Initially, you have to go like this. So it should be absorbed in your mind. Okay. 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 Sorry. It's a diol. Now, Harshvardhan, can you speak the name of this molecule? Pause with pause, please. Very good. Butane 1,2-diol. Yes. Yes, Shreya, can you speak the name of this molecule, please? Yes, pentane 2,3,4-triol. Is that clear, everyone? Is that clear? Okay, very good. Now we can mix several functional group. Okay, लेकिन उसका पूरा सेगमेंट हम लास्ट में लेने वाले एक साथ में. बट अगर आप इसमें इन लगा दो तो इन ऑल. ओके,
इन लगा दो, इनॉल। कोई अल्काइल ग्रुप्स लग जाए जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो उसके साथ में पढ़ना है, so that can be done. So I am adding three more structures. I am adding three more structures with branches. What? With branches, with normal branches like methyl, ethyl, isopropyl, butyl. Okay, that kind of branches. Very famous branch is isopropyl. What? Isopropyl is a very famous branch. Okay, now let's solve this molecule. जिसको आता है बेटा वो आप लिख के रखो, एंड लास्टली आई विल आस्क यू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, numbering we will start from the right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Jamie, can you speak the name of the eighth molecule? Go on, Jamie Patnakar. Just you go on by your pace. Okay, look at the structure, pick the name. Come on. Yes. Hep. इसके बिना का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. Heptane to all. Okay, so the name of this molecule would be 3,4 dimethyl heptane to all. Okay, Anushka, can you speak the name of the ninth molecule, beta? Again, without A, you cannot, without N. Yes, don't forget to put that word, otherwise the whole thing will be wrong. Okay, these two things are compulsory, should be there in any molecule. Okay, फिर से बोलो अनुष्का. Hexane 2,4 by all, isn't it? Okay. So next, Dhruvi, speak the name of this molecule. Perfect. 3-ethyl pent A 2,4 diol. So is that okay, everybody? Whenever you are facing any alcohol, you just go through like this, whether it is cyclic or alicyclic. These molecules are acyclic molecule. Alicyclic is different. Okay, alicyclic is a cyclic kind of molecule, but these are acyclic. So understood alcohol, how to name the alcohol, specifically how to use the all word and in the molecule. That is the primary objective, to use the all word. Okay, now let us take hello. Give title hello, everybody. So you can take here halides.
halides. Halides are represented by RH और उसका जो prefix होता है that is a halo. Halo is the prefix. In the 17th group, there are 4 elements: fluoro, chlorine, bromine, and iodine. Respectively, we will use them as a fluoro, bromo, and iodine. Most compounds occurred are of chloro, bromo. Most compounds are occur of fluoro and bromo. Okay. So accordingly, we'll use. Now we have CH3, CH2, CH2, Cl. Suppose look at these molecules. We have to start numbering accordingly. 1, 2, and 3. We speak like propane. Is that okay? If I start with the propane, no, because I have to speak the prefix first. 1 chloropropane. 1 chloropropane. So it's a 1 chloropropane. I am separating just to make you understand. Otherwise, they are not separated. 1 chloropropane. Okay. In this case, if I change this with Cl, okay, it would become 2 chloro. Yes, 2 chloropropane. Okay. So start writing. I will be changing little bit. I will be adding new. Okay. So you make it done. Everybody. This is my master page. Okay. You have to recreate your page every time. I'm not going to make much changes. Few changes. But you have to write it again. You don't scribble and write again. Okay. Don't do that. आपको rewrite करना है पूरा. चलो. Everyone. Start doing. And once it is done, name these molecules. Start naming the molecules. The same method. In case where there are 2 different halogens present, you have to name and number alphabetically. अगर वो confusion करते हैं कि same position आती है तब जाके आपको alphabetically choice करना है कि मैं number कहाँ से करूँ. But if they are on different positions, like अगर यहाँ से जाओगे तो Cl पहले आ गया, अगर वहां से आओगे तो Br लेट आएगा. It's okay, you can start with the Cl only. आपको Cl से ही start करना है. अगर वहां पे पोजीशन इक्वल हो, जैसे यहाँ पे पोजीशन इक्वल है, तब आपको प्रायोरिटी देनी है यहाँ से. बट अगर वो पोजीशन अनइक्वल हो, माने कि 1 2 3 1 2, कौन सा लोवेस्ट लोकेंट आ गया? 2. तो हेलोजेंस आर ऑल इक्विवेलेंट टिल पोजीशन आर डिफरेंट. बट जब पोजीशन सेम हो जाए तब उनकी प्रायोरिटी उनके अल्फाबेट से होती है. और उसमें भी अल्फाबेटिकली नहीं, हाँ, ब्रांच में सेट करते वक्त अल्फाबेटिकली यूज करने का. यस, जैसे मिथाइल और क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो फर्स्ट, देन मिथाइल लेस्ट. बट नंबरिंग हम हेलोजन या तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रख के ही करते हैं. Do you understand, online students, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Please do all this practice on live lecture, okay, with continuation of the session.
Nancy, are you understanding? Because the basic tools are already done, we'll be sending you the recordings, but you go like pace में आ जाओ अभी जितना भी आपको समझना है. Right? Good. Iodo, IODO. ब्रोमो का बी पहले आया तो ब्रोमो पहले लिखते हैं, मिथाइल बाद में लिखते हैं. नाम लिखते वक्त सारे ब्रांचेस को अल्फाबेटिकली अरेंज करो. नंबर देने के लिए हेलोजन को प्रायोरिटी दे दो. इसका हो जाए, प्लीज कीप क्वाइट थ्रू आउट द सेशन. It is necessary that you put dash between name and the number. You put comma between two numbers. Okay, it is required. Don't allow any space between the name or the pauses. I'm starting from the third one. Look at this. It's at second position. First of all, positions are right or wrong? Positions are right? Yes. So it's a 2-chloropentane. Pentane. Okay. Now should I, positions are okay? Yes. Okay. So 2-chloro, is that right? Okay, very good. 4-bromo. Yes, 4-bromo. 2-chloro. Hexane. Is that okay? Okay. Now numbering should be done from the, because both the halogens are on the same position coming from left and right. So in that case, confusion is created. You have to start numbering as per the alphabetical priority. So you have to give numbering like this: 1, 2, 3, 4. 2-bromo, 3-iodo. 2-bromo, 3-iodo butane. Now numbering is okay. Is that numbering okay? Yes. Yes. Anybody please raise hand. Yes, student. 1,2-dichlorobutane. Perfect. 1,2-dichlorobutane. Perfect. Very good. Anybody else? Numbering and naming. Sir, can Yes, Manav. 2, 3, 4 trichloropentane. Yes, 2, 3, 4 trichloropentane. Trichloropentane. Okay, the next name will be given by online student Drashti. Drashti, is that numbering okay? Sir, actually, I have not solved this one. Like, I was solving till 7th only. So, Okay. Okay, anybody else? Yes, better Ronak. Yes. 4-methyl, 3,4-dimethyl heptane. Yes, it's a 2-bromo, 3,4. It's a dimethyl because there are two methyls. You have to use the word di. And remember, this di का जो D है वो अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं करा जाता है जब आप नेमिंग कर रहे हो. तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है? M and B. Number indicating words are not considered in alphabetical order. I repeat the sentence. Number indicating words are not considered in alphabetical order. Okay. Anybody else? Yes, Sachi.
Name this. Is the numbering okay first of all? Why should we go from left side? But actually halogen comes nearer this side. So when halogen comes nearer on the any side, you have to start from that side only. But whenever confusion arises, then only you have to go for alphabetical ordering. Understood everybody? So Sanchi, numbering is good? Okay, then start naming. It's not on one iodo, it's a two iodo. I just want to correct this name. Little bit. पहले alphabetically भी आएगा ना? आप बताओ बेटा पीछे. Yes. 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 Hexane. Yes. So naming would be like this: 4 bromo, 2 iodo, 3 methyl hexane. Everybody okay with this? Okay. Anybody else? Numbering is okay first of all. Okay. Drashti is giving name, but numbering is okay first of all. Drashti, tell me. No, sir. From left you have to start. Numbering is wrong. Yes, numbering is wrong. Perfect. Numbering should be started from this end. Yes. Now name please. 2 bromo, 4 chloro, 3 ethyl pentane. Yes. Now offline students. Anyone please? Bolo. Okay. Aman. Please. So 2 bromo, 4 chloro. Is that okay? Chloro, 3 ethyl pentane. Pentane. Okay, is that okay, everybody? Any doubts here? Okay. Now this is called as halo. We want to use the word halo, and that is we did. Correct? Now let us move to these 3 functional groups: aldehyde, ketone, and carboxylic acid. When we are going to these 3 functional groups, initially we have to locate on these 2 because their naming is exactly same way: aldehyde and carboxylic acid. Okay, so we will make 2 parts in our book. One part is for the aldehyde, one part is of the carboxylic acid. Okay, so make 2 segments in your book: aldehyde on the left, carboxylic acid is on the right, or else you can use 2 pages you want. आप 2 pages left and right वाले use कर सकते हो. There are 2 options you can go. Okay. So we make 2 parts. Left page is of aldehyde, right is carboxylic acid. Okay. So this is aldehyde. This is carboxylic acid. It is represented by RCOH, commonly written as RCHO. It is represented by RC double bond OH, commonly written as RCOOH. This one has a suffix value al. This one has a suffix value Oic acid. yes, oic acid. Their namings are exactly similar. Only the difference is suffix. No rule is deviating these 2. कोई भी ऐसा रूल नहीं कि इन दोनों को अलग कर पाए. सेम चीजें चलेगी सारी की सारी. Okay. Now first example. I was telling you कि ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे ए और ए कि जिनमें जो कार्बन है वही फर्स्ट नंबर का कार्बन हो जाएगा. What I am telling you, I mean to say ये वाला कार्बन ही आपका चेन का फर्स्ट कार्बन कहलाएगा
whatever the length of the chain after that. बाकी सारी branches वहां से start करना होगा आपको. Okay, so we will take first molecule CH3CHO. अगर मैं यहाँ पे वो molecule को ले लूं तो it would be called as CH3COOH. नंबरिंग आपका इधर से होगा 1 and 2. दो कार्बन है, इथेनॉल. दो कार्बन है, इथेनॉल. So you have to take each word plus n word plus all. इस e को ड्रॉप करके लिखना है. So ethanol. Understood? Because the carbon's position is fixed, one number. Understand, this is very important. कार्बन की पोजीशन जो 1 नंबर है वो फिक्स हो गई है. इसके लिए आप उसको नंबर नहीं करोगे चलेगा, उसकी पोजीशन को लोकेट नहीं करोगे तो चलेगा. इथेनॉल, इथेन 1 आल नहीं, इथेनॉल. कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. इथेन 1 ओइक एसिड नहीं, इथेनोइक एसिड. Because it is a by default position number 1. So simply you have to write it plus n plus oic acid. These two are separate words. तो यहाँ पे एक स्पेस लगेगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं आएगा. So simply you have to write ethanoic acid, ethanoic acid. Now second molecule. If I have only one carbon, HCHO, इस कार्बन के पास एक वैलेंसी बाकी है, तो just have a close look. ऐसा कुछ है, H, C double bond O, H, ये molecule. Similarly, look at this, H, C double O, H. So ये H, C double bond O, OH. So we have only one carbon here, only one carbon. So methanol, क्या आएगा? Methanol. Methanoic acid, क्या आएगा? Methanoic acid. So write down the names, please. Methanol, methanoic acid, methanol, methanoic acid. Now इन दोनों के ही फेमस नाम है. वो फेमस नाम से बहुत सारे लिटरेचर में क्वेश्चंस गिवन होते हैं. So all the famous names are there. इनके सारे फेमस नेम को हम हमेशा हमारी लिटरेचर में यूज करते रहते हैं. ये जो वर्ड है मिथेनॉल, या तो ये जो अल्डिहाइड, इसको फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं. फॉर्मल्डिहाइड. इट इज द लैटिन वर्ड इंडिकेटिंग एंट. एंट माने कि चींटियां. क्योंकि सबसे पहले जब इसका इन्वेंशन हुआ था एसिड का, इस एसिड का फॉर्मिक एसिड, तो वो चींटियों में से निकला था एसिड, और उसमें ये स्ट्रक्चर था. इस स्ट्रक्चर को उसके नाम से कॉमन नेम बनाया गया, फॉर्मिक एसिड. फिर से फॉर्मिक एसिड. दिस कंपाउंड यू ऑलरेडी नो, विनेगर. इट्स अ विनेगर, एसिटिक एसिड. व्हाट यू कॉल? एसिटिक एसिड. So it's a acetic acid. Similarly, it is called as acetaldehyde. Acetaldehyde. They both are very strong smelling compound. Okay, they both are very strong smelling compound. Penetrating smell है इसकी. This is acid में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड ये है. Methanoic acid is the most acidic compound within the carboxylic acid groups. Methanoic acid is the most acidic compound. Okay, so when you understand detailed chemistry, you will come to know why it is so. Okay, now coming to the points. Third structure. Now let us make several structures. CH3, CH2, CHO. Can you name these, anybody, please? बोल दे बेटा. Propanol. What's propanol? Okay. सिंपली 3 कार्बन का एसिड क्या कहलाएगा? Propanoic acid. Yes, propanoic acid. No need to put number unless there is a branch. अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो नंबरिंग करना कंपल्सरी है बेटा. 1 2 3. 2 मिथाइल प्रोपेनॉल,
ओके, सिमिलरली यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH लगा दे, 2 methyl propanoic acid. Okay, write down the names. 2 methyl propanol, 2 methyl propanoic acid. Why are we giving numbers now? To position the branches. Correct? हमने नंबर क्यों करा? ब्रांच को पोजीशन करने के लिए करा. फोर्थ नंबर. नाउ बॉन्ड लाइन में इसको कैसे लिखेंगे? देखो, बॉन्ड लाइन का रूल है कि कार्बन हाइड्रोजन को हाइड करा जाता है. कार्बन हाइड्रोजन को हाइड करा जाता है. तो लास्ट में कार्बन हाइड्रोजन हाइड हो गया तो बच क्या गया? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कौन से वाले बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से. जस्ट टेक डबल बॉन्ड, दैट्स इट. जस्ट टेक द डबल बॉन्ड, दैट इज एल्डिहाइड. कार्बन हाइड्रोजन तो हिडन है. तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल. क्या हो गया? Butanol. 1 2 3 4. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मैंने ब्रांचेस लगा दी बेटा. यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल. 2, Yes, 3 2 3 dimethyl dimethyl butanol. methyl butanol. So write down 2 3 dimethyl butanol. Perfect. यहाँ पे आई एम टेकिंग सेम स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन को तो हाइड कर लोगे आप. करेक्ट. बट ये वाला हाइड्रोजन हम हाइड नहीं कर सकते. रीजन क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से. तो इस OH को दिखाना पड़ेगा. सिर्फ इस कार्बन को आप हाइड करोगे तो दैट कार्बन इज हिडन. तो उसके ऊपर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? OH. So whenever it is written like this, 1 2 3 4, yes, name please. Then it 2 3 dimethyl butanoic acid. Yes, so give name. 2 3 dimethyl butanoic acid. Are you all understanding? Is that clear, everybody? Okay. Now I am giving you two structures. Just give their names. They are the bond line formulas. But they are not similar in acid and aldehydes. They are different structures. Do we understand, beta? Satya, you understand? Numbering from that carbon only. Okay. Done. Very good. Done. Done. पीछे प्रीत. Okay. Saranshu. Nancy. Done. Guys, Done, sir. it's similar to the previous one. Yes. Good. Okay. Numbering from this carbon. 1 2 3 4 5. Look at this. There are two branches. Both the branches are different. The one is called as methyl, 1 carbon branch. 2 carbon branch is ethyl. Alphabetically, which is priority? Ethyl. So you will speak 3 ethyl, 2 methyl, pentanoic acid. Sorry, pentanol. This is pentanol, earlier section. So write down 3 ethyl, 2 methyl, yes, pentanol. Yes, here. Numbering can from I- this carbon. Yes, Drashti, you speak.
2 Online? ethyl, 2 ethyl, 3,4 dimethyl hexanoic acid. Perfect. Yes. Anybody from offline? Yes. Bolo Manav. 2 ethyl, 3,4 dimethyl hexanoic acid. Perfect. So it's starting from 2 ethyl, 3,4 dimethyl hexanoic acid. Is that clear, everybody? Now there is a change, little change. When you take both the side aldehyde, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया कि भाई यहाँ से भी CHO और यहाँ से भी CHO है, both the side aldehyde है, then which is the priority? So priority can be of any, okay? प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है जब तक कोई ब्रांच नहीं है, सीधा सीधा बोल सकते हो इथेन डायाल, 2 आल है तो इथेन डायाल, 3 है, 3 है तो अलग बात है बेटा, 3 की स्टोरी अलग है, लेकिन 2 है लेकिन 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन डायाल, देन ब्यूटेन डायाल, सिंपल यू कैन गो। सिमिलरली यहाँ पे आओगे तो कैसे बोलोगे, इथेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, लाइकवाइज, ओके। बट जब ब्रांच आ गई तो क्या चॉइस करोगे कि जिस तरफ ब्रांच क्लोजर है उस वाला आल्डिहाइड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहला हो जाएगा। अंडरस्टूड? फ्रॉम दैट साइड यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग। सो लेट अस टेक सच कंपाउंड्स। नंबर 6, yes please, number 6, continue in the same page. Now let us see कि यहाँ पे एक aldehyde है और यहाँ पे एक aldehyde। Now can you easily identify ना, this is carbon, okay? So both are aldehydes. तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? Yes, propanediol. And here you can give like this, double bond O, OH, double bond O, OH, propanedioic acid. So give name, propanediol, propanedioic acid. Now making several compounds, you just solve quickly, put your target 15-second structure, not more than that, go like that way. Okay, go.
पानी बोल रहा हूँ एक मिनट okay 1 more minute please okay now so numbering must be started from which end left or right Left hand. left yes so this is first second third fourth fifth 2 methyl pentane dial so its the name is 2 methyl pentane dial correct okay numbering should be started from which end Left it's hand. important okay why should we go from the left yes Because first alphabetically branch is near to E that. branch comes first so this is ethyl and this is methyl see both the positions are same 1 2 3 1 2 3 but you have to go from ethyl first okay yes anyone please Sir, can आप we? बोलो हर्षित 3 ethyl, 4 methyl, hexane diol, hexane dioic okay hexane dioic acid perfect everyone Sanchi numbering from which side left यहाँ से राइट से why right अच्छा 1 पहले पोजीशन देखते बेटा 1 2 3 1 and 2 सबसे पहले हम ब्रांच की पोजीशन चेक करते हैं अगर पोजीशन नजदीक हो जाए शांति तो हमें वहां से जाना है जब पोजीशन इक्वल हो जाए तो हमें चॉइस क्या करना है अल्फाबेट्स के लिए जाना है तो नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द यस लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 आप बोलो बेटा नंबर 4 ethyl, 2 3 dimethyl, hexane diol, 4 ethyl 2 3 dimethyl, dimethyl yes diol, hexane diol is that clear everyone Sir, can you explain this again? yes first of all I'm explaining again the numbering must be started from the first lowest locant rule what lowest locant locant माने कि substituent या तो branch अगर आपकी ब्रांच नजदीक होती है तो आपको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है दैट इज इनवेरिएबली ट्रू लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रांच ना होती ये वाली ब्रांच ना होती देन नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द राइट साइड द रीजन बीइंग कि यहाँ पे ब्रांच ई आती है और यहाँ पे ब्रांच एम आती है मिथाइल जैसे हमने आगे किया ना यहाँ पे सेम लाइक बट इस केस में नंबरिंग हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा नाउ 4 नंबर पे इथाइल ब्रांच है लिखने के लिए तो हमें अल्फाबेटिकल ही लिखना है तो 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन डाइआर you understand online student Yes, sir. okay now this one first of all numbering Dhruvi why right side
the branches near. Okay, 1, 2. Yes, branch is closer. 1, 2, 3. So correct. Numbering from the right side. Now all these branches are methyl. बेटा ये methyl है, yes or no? ये methyl है, ये भी और ये भी. Okay. Now name. Anyone please? Yes, Harshvardhan. 2, 3, 4, 4 tetramethyl hexane diazoic. Perfect. 2, 3, 4, 4 tetramethyl hexane dioic acid. Correct? Good. 2, 3, 4, 4 tetramethyl hexane dioic. This is not a space, okay? Dioic acid. Let us put space here. You understand everybody? Any doubts? Good. You are going good and you understand everything. Perfect. Yes. बस नहीं आएगी क्या? और वो टर्मिनल से ही होते, उसके बीच में पोजीशन होने के कुछ नियम अलग जो आपको सेपरेटली डेप्थ में क्लास 12 में पढ़ाई जाएगी. आपके आएगी अभी. ओके, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, बट करंटली वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली टर्मिनल्स. ओके, उसका नेमिंग अलग है, नेमिंग उसका अलग करते हैं. तो वहां पे हम नहीं जा रहे, वो 12th में थोड़ा डेप्थ ले गए हम. अभी हमारी टर्मिनल्स वाली पोजीशन पे ऑइक एसिड है. मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ पे हैंग करके मैंने COOH लिख दिया, तो उसका नियम ही अलग है. क्योंकि आप कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 दोगे, इसको दोगे तो ये लास्ट हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, इसको दोगे तो ये लास्ट हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा. So in that case, there are separate set of rules, and that we will understand in 12 only. But right now, like this. Is that clear, everybody? Any doubts? Okay. तो oic acid, dioic acid समझ में आ गया? Okay. उनके नियम समझ में आ गए? Good. Now, after that, we will take ketone. So give title ketone. Just add this quickly. Understanding? Good. Left. Ketone. Ketone is given by RCOR और उसका सफिक्स जो है, सफिक्स वैल्यू वो ऑन है. Very first member of ketone is 3 carbon compound. I said this statement and this is very true. Very first member of ketone is 3 carbon compound. उसमें 1 कार्बन वाला कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता है. 3 कार्बन से आप स्टार्ट ही कर सकते हो, बिकॉज बोथ द कार्बन आर required to place this carbon in between. So carbon, that is CH3, then CO, then CH3. नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों साइड से जाओगे तो कीटोन की ऑन की पोजीशन तो सेम ही रहने वाली है. तो सिंपली प्रोपेन ऑन, propane on. Okay, if I write separately, it could be like prop plus ane plus on, और उसको कंबाइन कर ले तो इस e को ड्रॉप करके लिखना है. So we'll write propane on. Do you understand, everybody? Let us go. CH3CO CH2 CH3. Now I would like to hear from you. Shall we give number? Okay. Why? If I write 1, 2, 3, 4, butane 2 on. अगर ये मान लो यहाँ पे होता तो नंबरिंग कहाँ चला जाता, उस साइड. उस केस में भी क्या बन जाता, ब्यूटेन 2 on. So shall we give number now? No, not required ना. समझो, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से यहाँ पे रख दिया इसको, तो नंबरिंग क्या हो गया, 1, 2, 3, 4. इज दैट ओके? नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 on. ओके, लेट अस टेक दिस इज ब्यूटेन 2 on. करेक्ट. अब मैंने इसको हटा के, समझना, इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए. लेट अस पुट CH2 हियर एंड C double bond O.
नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी बेटा? इस तरफ से 1 2 3 4 नाम दीजिए ब्यूटेन 2 1। जब नंबर का पोजीशन वेरी किया ही नहीं जा सकता, माने कि 3 1 तो पॉसिबल ही नहीं इस केस में, तो नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ब्यूटेन ऑन। तो इस कंपाउंड को ब्यूटेन 2 ऑन नहीं बोला जाता, सिंपली आप बोलोगे क्या? ब्यूटेन ऑन। तो ऐसी कैटेगरी में नंबरिंग की शुरुआत होती है 5 कार्बन से लेकर, कहाँ से? 5 कार्बन, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी है, वेरिएशन है। लुक एट दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, यस बोलो, पेंटेन 2 ऑन 1 2 3 4 5, इजंट इट? अच्छा, कैन यू प्रिपेयर पेंटेन 3 ऑन? यस इट इज पॉसिबल ना, यू कैन प्रिपेयर पेंटेन 3 ऑन। तो जब वहां पे अलग अलग कंपाउंड्स पॉसिबल है, then only numbering is required. So pentane 3 on, perfect. Now bond line formula is like this, okay, 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4, whatever you want to take, just take like that. Take a branch first, name that. Take a branch first and name that. Where is remote, please, everybody? Yes, yes. Okay. Okay. Chalo, fifth number, I have given you this structure. Okay, and this, anybody can name this? Hmm? Beauty है है। चलो नंबरिंग कहाँ से आएगा? 1 2 3 4, यस नेम प्लीज। सिंथाइल ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में तो वो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है नहीं ना बेटा, ये हम यूज नहीं कर रहे, करेक्ट अमन? हर्षित, इज दैट क्लियर? यहाँ पे रख ही नहीं सकते, वैलेंसी चेंज हो जाएगी। 5 मेंबर 5 कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या? जिस कार्बन पे कीटोन होता है वहां पे मिथाइल नहीं होता। अच्छा मान लो यहाँ पे रख दिया, आप ऐसा बोल रहे हो, इसको चेंज नहीं करना है ना, इसको यहाँ पे रख के चेक करो कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है बेटा, ओके, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो गया? कार्बन। अब मानो कि ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना? और ऐसे तो हम बना ही नहीं सकते, तो मॉलिक्यूल अगर इस हाइड्रोजन को भी हटाया जाए, इसको भी हटाया जाए, उसके बाद इसकी वैलेंसी फुलफिल होती है। तो माने कि आप जिस कार्बन पे ब्रांच है वहां पे आप कीटोन नहीं लगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, मींस ब्यूटेनॉन इज द आंसर, ब्यूटेन 2 ऑन नहीं बनता, क्योंकि कीटोन यहाँ पे है ना नजदीक, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है ना, है ना? पहले गेस्ट को खिलाया जाता है ना, फिर घर वालों को मिलता है, और फिर बच्चों को लास्ट में ऑफर किया जाता है, अगर कोई गेस्ट आ गए तो, स्पेशल गेस्ट, है ना? अंडरस्टूड? तो ये हमारे गेस्ट है अभी राइट नाउ, जो फंक्शनल ग्रुप बन के बैठे हैं उनको प्रायोरिटी देनी ही है, करेक्ट? हाँ, 2 गेस्ट आ गए और 2 में जो अच्छा वाला गेस्ट है उसको प्रायोरिटी पहले मिलती है, लड्डू उनको पहले मिलते हैं, फिर उनको मिलते हैं, तो वो हमें चेक करना है। ओके, कंटिन्यूइंग, आई एम मेकिंग 3 मोर स्ट्रक्चर्स ऑफ कीटोन, मेक दैट डन। चलो क्विकली, अगर मान लो 2 कीटोन हो गए तो क्या बोलोगे? डाई ऑन,
make these molecules done. Keep the time frame in your mind. 15 second structure. Slowly increase your capability. So you can less time, more structures. Am I audible? Online students, are we going right? Yes, sir. Then very good, perfect. Anushka, going good. Satya, understanding? Shlok, done? Done? कार्बोक्सिलिक है, Done, sir. लेकिन हम बाद में वो बात करेंगे, उसको अभी मिक्स नहीं करते. ध्यान इधर, everybody. Shlok, you have to take priority. Give the name of this compound. नंबरिंग कहाँ से करेगा बेटा? राइट या लेफ्ट कोई भी चलेगा? चलेगा? ओके. यस. सो 1 2 3 4 5. पेंटेन. पेंटेन पूरा बोल दिया. उसके बाद 2 4. यस. तो पेंटेन में पीछे ई मत लगाना बस. पेंटेन 2 4 डाइओन. यस. ध्रुवी, नेम दिस. ओके. 4-methyl pentane 2,3 dione. Yes, perfect. 4-methyl pentane 2,3 dione. Yes, Chaitanya. Left side 1 2 3 4 5 6 7. Dione. Yes, that is the only correction required. Otherwise, it's good. So, 3-ethyl. Why ethyl first? Alphabets. 4-methyl heptane 2,5 dione. Is that clear, everybody? Any doubts still here? Okay. So, aniline, alcohols, halides, aldehydes, ketones, carboxylic acids. Any doubts? Okay. Now coming to this less famous groups. लेस फेमस क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बहुत कम आएगी आपके सिलेबस में, लेकिन आएंगे तो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में आएंगे. एंड एट दैट टाइम आपको उसके नाम तो करने ही होंगे. तो हमें ऐसे लॉन्ग चेन या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं समझना है, लेकिन यस इसको पढ़ा कैसे जाता है या तो इसका नाम कैसे किया जाता है परफेक्टली, उसको लेना है. तो ऑल दिस 4 ग्रुप्स आर डेरिवेटिव्स. व्हाट आर डेरिवेटिव्स? Derivatives are something which are obtained as a byproduct from the main products. The main product here is carboxylic acid, and they all are derivatives of the carboxylic acids. तो जब भी carboxylic acid की preparations चलती है, या तो उसके रिएक्शन होते हैं, या तो इंडस्ट्री में उसका कोई काम होता है, तो दे माइट फॉर्म, वो बन सकते हैं. उसके लिए हमें काम करना है. करेक्ट? चलो, गिव टाइटल फर्स्ट एसिड क्लोराइड. गिव टाइटल एसिड क्लोराइड. ओके. एसिड क्लोराइड, यू कैन टेक एसिड हैलाइड 2 वर्ड. वो क्लोरीन की जगह पे कोई भी हेलोजन हो सकता है. एसिड हैलाइड या तो एसिड क्लोराइड, RCOX, RCOCL, RCOX, RCOCL. इसका सफिक्स वैल्यू है
ऑयल हैलाइड, हैलाइड की जगह पे क्लोरीन होगा तो ऑयल क्लोराइड. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आप नंबर 1 कर दो. Unless until it is given in multi-polyfunctional group, you have to separate the priority. Otherwise, CH3 COCl, CH3 COCl, 1 2. इथेन, इथेन पूरा लिख लिया. ऑयल, क्लोरीन है तो क्लोराइड. So you have to drop this E, write it again. Ethanoyl chloride, ethanoyl chloride. It is acid. It is acid. Okay. Let us write another few names. CH3, CH2, CH2, COBr, COBr. Butanoyl bromide. Butanoyl bromide, yes. Yes. Butanoyl bromide. Third one. CH3, CH2, 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 COI. How many carbons you can count? 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoyl iodide. Pentanoyl iodide. Are you understanding? So simple. Just oil halide लगाना है. Very rarely you will face some branch compounds. Let us take one branch compound. COI. इसको एक्चुअली शो नहीं करना है. जस्ट लाइक दिस. ओके. डबल बॉन्ड हो, कार्बन को शो नहीं करते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. Yes, you can name like 2-methyl. Pentanoyl Yes. iodide. Yes, pentanoyl iodide. So 2-methyl pentanoyl iodide. Are you understanding? It's so simple. No much complexation required. Okay, simple. Now next, amide. What is the time? Time. Amides. Okay. In amides, our representation is RCONH2. Similar to this, just suffix value is changed. That is amide itself. Suffix value is changed. That is amide itself. If I'm giving you 2-carbon compound, that is CH3 CONH2, you will speak this ethanamide, ethanamide, ethanamide. Okay. So you will write root word eth, primary suffix, secondary suffix. Secondary suffix has a, so you must drop e. आपको e को drop करके लिखना होगा. So what you speak? Ethanamide. So the full name would be ethanamide. Yes, please. कार्बन दो कार्बन है, 1 and 2. This carbon is counted like carboxylic acid की derivative है तो वहां पे भी count करा ही था. So they are the derivative of acids. So this carbon is counted. Okay. CH3, CH2, CH2, CO, NH2. अगर कार्बन चेन का पार्ट है हमारा, इसका बेसिक आंसर ये है, कार्बन चेन का पार्ट है, इसको काउंट तो करना ही पड़ेगा. ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड. Let us take bond line 1, double bond O, NH2, 1, 2, 3, 4. I am taking branch, taking branch. 2-methyl butanamide. Okay, very good. 2-methyl butanamide.
Are you understanding? Is that clear, everyone? Okay. One more. Yes. Yes. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5. ये कौन सा ब्रांच हुआ? इथाइल. ये मिथाइल अल्फाबेटिकली. 2 इथाइल, 4 methyl pentanamide. Is that clear, everybody? Amides are okay. Or are you okay with amides? Actually, amides are always okay. You must be okay with amides. Now taking the next one, ester, my favorite one. क्योंकि ये बहुत ही गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं. Esters are actually perfumes. Esters are perfumes. They are widely used in perfumery industry. So esters, they are obtained from the flower's petals. Okay, they are extracted from the flower petals. So they are esters. Write down. Esters are called as RCOOR. RCOOR. इसको बोलने के लिए आप सबका ध्यान इधर अभी. जस्ट अ मिनट. हाँ, प्लीज प्लीज. But you can't ask in any perfumery shop and I want esters. You can't ask that. You just ask brand name. When you see the chemicals present inside, if they are given, if they are esters. Okay? जैसे लास्ट टाइम बताया था कि अपनी मम्मी को मत बोलना ये चाहिए कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम. यू मस्ट बी नोइंग. एसिटिक एसिड नहीं मांग सकते घर में जाके किचन में. गिव मी एसिटिक एसिड, गिव मी विनेगर, लाइक दैट. पता है ना, घर में किचन में विनेगर का यूज होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाने में. मैगी पास्ता. My mom for acetic acid, she will give me vinegar. Okay, that's good. She must be knowing. Yes. Then you can use that coded language. It is coded language. Correct? चलो स्टार्ट करते बेटा. अमाइड. यस हर्षित. यस बेटा ध्यान इधर. अब जहां पे CO लगा है 100% फोकस हियर. जहां पे CO लगा है ये वाला पार्ट, that part is coming from the acid, isn't it? RCOOH, that part is coming from the acid. तो उसके लिए हम ओइक एसिड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ओइक एसिड. जैसे यहाँ पे एक कार्बन है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. CH3, 2 कार्बन लेके 3 कार्बन. टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा? 3. तो इतना पोर्शन 3 कार्बन का है. तो आप इसके लिए OH बोलोगे. क्या बोलोगे? OH. That is coming from oic acid. So OH, propanoate. What you speak? Propanoate. Speak once. But you are connecting what carbon here? This CO वाले सारे कार्बन को कनेक्ट करते हो.
उसके बाद एक और ऑक्सीजन है और वहां पे एक कार्बन कनेक्टेड है, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ ब्रांच। वो क्या है? ब्रांच। तो उसको मिथाइल बोलेंगे, टुगेदर विल कॉल इज अ मिथाइल। व्हाट? मिथाइल। सो मिथाइल प्रोपेनॉइड, व्हाट इज स्पीक? मिथाइल प्रोपेनॉइड। ओके, so the name will be methyl, separate them, propanoid. Means this OH is coming from the carboxylic acid and this methyl is actually coming from the alcohol. When you understand the procedure, it is coming from the alcohol and this will form esters. तो अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन होके एस्टर एंड वाटर बनता है। अल्कोहल प्लस एसिड फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर। ओके, वन मोर स्ट्रक्चर, सी CH3CO, OCH2CH3। नाउ इतना पोर्शन क्या बोलोगे आप? OH, OH बोलोगे सिर्फ। इथेनॉइड, बट उसके आगे ब्रांच क्या लगेगी? इथाइल। तो इथाइल इथेनॉइड। ओके, या तो इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड का पार्ट है ना इतना, तो इथाइल एसीटेट इज अ फेमस नेम। इथाइल इथेनॉइड इज IUPAC नेम। So write down both the names, ethyl ethanoate, ethyl ethanoate, ethyl acetate. Let us take one more compound, CH3 CH2 CO OCH2 CH2 CH3. Yes, anybody please. Yes, very good. Propyl, 1 2 3. Propanoate. Yes, speak again. Propyl. Yes, propyl propanoate. Propyl propanoate. In short, the key is कि जो इस सिंगल ऑक्सीजन के पास जो अल्काइल ग्रुप है उसको आप अल्काइल ही पढ़ोगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। एंड ये वाला जो पोर्शन है उसको आप OH लगा के पढ़ोगे। दैट्स इट, दैट इज द की। इन दोनों को सेपरेट करना। अंडरस्टूड? इनमें कोई सेपरेशन नहीं है, बट इन दोनों को सेपरेट करना है। वन मोर कंपाउंड, जस्ट ड्रॉइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, डबल बॉन्ड O, again O, and then 2 carbons. Count the carbons from here. 1 2. Ethyl, yes, it is a ethyl. 1 2 3 4 5 6. Hexanoid. Hexanoid. Perfect. Ethyl hexanoid. Ethyl hexanoid. Is that clear? स्ट्रेस कैसे पढ़ते हैं हम? इसका ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं करना है। आई टोल्ड यू, जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज रीड। नेक्स्ट वन, एसिड एनहाइड्राइड। Acid anhydride. This is also a derivative of carboxylic acid. This one is also derivative of carboxylic acid. So give title acid anhydride. ओके, इसका रेफरेंस है RCOOCOR, ये उसका रेफरेंस है, रिप्रेजेंटेशन रेफरेंस है। उसको हम ओइक एनहाइड्राइड करके पढ़ते हैं, तो इट्स ओइक एनहाइड्राइड। Its oic anhydride is a suffix value. Let us understand one more compound. CH3COO COCH3. Understand how it is spoken. N का मतलब सिमिलर, माना कि जब भी आप N बोलते हो तो सिमिलर चीजें आती है। तो इस साइड का पोर्शन इस साइड से सिमिलर है और उसमें भी ये पोर्शन सिमिलर है, COCO। इसको तो बोले आप अलग करो, लेकिन ये पोर्शन सिमिलर है, तो उसके लिए हमने बोला एनहाइड्राइड। जान इधर, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 and 2 कार्बन, यहाँ से किया तो 1 and 2 कार्बन। अगर वो दोनों कार्बन सेम है
तो आप ऐसा बोलोगे, सिंपल एक ही बार बोलोगे, इथेनॉइक एनहाइड्राइड. व्हाट यू विल स्पीक? इथेनॉइक एनहाइड्राइड. लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले रख दोगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में रखोगे, देन एनहाइड्राइड. अंडरस्टूड? तो इसका नाम कहाँ से आया? 1 and 2 कार्बन से आया, दोनों सिमिलर है तो एक ही बार स्पीक करेंगे, इथेनॉइक एनहाइड्राइड. Let us take a different compound, CH3, CH2CO, OCO, CH3. Understand that we have two different chains. This is 1 and 2. This is 1, 2 and 3. Alphabetically ethyl and propyl को arrange करना है. Ethanoic, propanoic, anhydride. ठीक? Ethanoic, propanoic, anhydride. Write down the name. Ethanoic, propanoic, anhydride. Now solve by yourself. First of all, identify the number of carbon on both the sides. नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? मैं यहाँ पे कर लूँ तो 1, 2, 3, 4. यहाँ से कर ले तो 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा ये क्या है? पढ़ो इसको. पेंटेनॉइक. इसको अल्फाबेटिकली कौन? ब्यूटेनॉइक, फिर पेंटेनॉइक, फिर एनहाइड्राइड. राइट डाउन. ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉइक, एनहाइड्राइड. इन वर्ड्स को अलग अलग लिखा जाता है. ओके यहाँ पे वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, इन वर्ड्स को अलग कर दिया जाएगा क्योंकि उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग कनेक्शन है. तो दैट इज इट. इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेशन में नहीं ले जाना है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कम्स, अमाइंस. व्हाट? अमाइंस. नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं अमाइंस. 1 minute complete this board. 1 minute में बोर्ड कंप्लीट करें, जिनका बाकी है. Make little speed with reference to Harshit. Online students, understanding? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अमाइंस जिसको आप या तो आप RNH2 बोलोगे या तो R2NH तो R3N. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. और इनके सफिक्स में सफिक्स तो कॉमन है. अमाइन इज ए सफिक्स वैल्यू.
will understand all the three all together, naming. Make three small parts, one primary amine, secondary amine, tertiary amine. In a notebook, three small parts. इसको हटा दिया जाए बेटा? हाँ? Just copy it down from the another one, okay? So we can organize the thing. Or else this recording will be available. तो यहाँ तक आगे चले जाना, फिर लिख लो. जब मैं बोलता होगा तब तूने लिख लिया होगा. चलो, हर्षित, is that okay ना? चलो, let's take three columns. Name them. Primary amine section, secondary amine section, tertiary amine section. First few minutes you understand here, not to write anything, just understand. यहाँ आर का मतलब हम अल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं, इनमें भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है वो. ओके, तो suppose we have CH3 NH2. अंडरस्टैंड. नाइट्रोजन जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3. तो इस नाइट्रोजन ने दो हाइड्रोजन को साथ बॉन्डिंग करा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बन है. तो एक ऐसा कंडीशन आया. अब यहाँ पे एक कंपाउंड लगता है सेकेंडरी, जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है बट उसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे. एंड वो हाइड्रोजन भी कार्बन ने ऑक्यूपाई कर लिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, तो टर्शियरी अमाइन हो गया. इन ऑल दिस थ्री केसेस we have to find the longest carbon chain surrounding to nitrogen. In all these three cases, that is a common point कि आपको longest carbon chain find करना है surrounding to nitrogen. Okay, यहाँ पे तो एक ही चेन होगी, तो आप उसको ही longest मानोगे. यहाँ से लेके यहाँ से जाओगे तो there are two carbons, but वो दोनों इक्वल है, तो जहाँ पे आपको लॉन्ग मिल जाए उस तरफ आपको मेन चेन मान लेना है, और यहाँ पे भी जिस तरफ मेन चेन मिल जाए वहां पे आप चले जाना. अब this particular portion which is longest chain portion, suppose it is called as meth plus n plus amine. meth plus n plus amine, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा methanamine. I am drawing, I am making another compound to make you understand. CH3, CH2, NH2, CH3. Understand? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये NH2 है, इसका मतलब प्राइमरी अमाइन ही है. NH2 वाले प्राइमरी अमाइन होते हैं. अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है, मैंने नाइट्रोजन के आसपास लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए बोला था. ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 प्रोपेन 2 एमाइन. व्हाट यू स्पीक? प्रोपेन 2 एमाइन. ओके, नाउ ध्यान इधर. यहाँ पे इतना पोर्शन आपका मेन हो गया. ये नाइट्रोजन के ऊपर ब्रांच हुई. नाइट्रोजन के ऊपर ब्रांच होने पे हम इसको पढ़ते हैं एन, कैपिटल एन. कौन सी ब्रांच है? मिथाइल. एन मिथाइल. ये क्या है? मीथेनेमाइन. एन मिथाइल मीथेनेमाइन. अंडरस्टूड? मीथेनेमाइन तो था, वैसे भी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, बट नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और वो एन मिथाइल करके पढ़ा जाता है. तो एन मिथाइल मीथेनेमाइन. Understand? This is also methanamine, but nitrogen has 2 branches. दोनों ही मिथाइल है, तो NN dimethyl methanamine. So you will speak like NN dimethyl methanamine. Understood everybody?
ओके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर CH3 NH CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या है बेटा? इथेनमाइन। मीन्स ये आपका लॉन्गेस्ट कंपाउंड हुआ ना, लॉन्गेस्ट चेन वाला कंपाउंड। तो ये ब्रांच हो गई। क्या आएगा बेटा? एन मिथाइल। दो ही कार्बन है बेटा, इसको काउंट नहीं करते हैं। एन मिथाइल इथेनमाइन। ओके यहाँ पे एक कंपाउंड नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3 एंड CH3 ओनली। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कहाँ पे है बेटा? दिस वन। So let us take this is the main compound. This is propanamine, isn't it? ध्यान इधर सबका, इसमें नंबरिंग भी चलेगा 1 2 and 3। प्रोपेन 1 amine, isn't it? प्रोपेन 1 amine, बट एन पे क्या पड़ा हुआ है? एक इथाइल एक मिथाइल। अब ई पहले आता है, एन मिथाइल पहले बाद में आता है। तो यू विल स्पीक लाइक एन इथाइल, अगेन एन मिथाइल, प्रोपेन, प्रोपेन 1 amine। अमाइन किसके ऊपर है? 1 नंबर के ऊपर है। तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 amine। That is how you have to go. Understood? Make this done now. I am making several compounds downside. You also solve them. These are important category. वो इथेन में दो ही कार्बन है, तो इसको 1 या 2 लिखेंगे कोई मतलब नहीं है। अगर ये यहाँ पे होता तो भी 1 हो जाता। इसके लिए वहां पे नंबरिंग इसमें थर्ड कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सॉल्व दिस देन। लिख लो, उसके बाद बोलना। Yes. You are learning basic version, इसके बाद डिटेल्ड वर्जन, इसके बाद एडवांस वर्जन of all the functional groups. Okay. Online students and everything. Doing, sir. Okay.
1 एमाइन हुआ तो बोलना पड़ेगा, 3 कार्बन हो गए तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा प्रोफाइल ओके, shall we start now? अगर हम स्टार्ट बोलते हैं तो अगर हम ऐसे ही मुंह हिलाते हैं तो हाँ होता है, ऐसे तो ना होता है, और ये डिप्लोमेटिक वर्जन है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। Then आप सर कर भी सकते हो, चलेगा नहीं करोगे तो। This one I am giving name, you just understand whether you are correct or wrong. If you are wrong, just make it correction. So this is miss numbering, you can start from any of the sides, 1 2 3 and 4. Butane 2 3 diamine. So it's a simple butane 2 3 diamine. Okay, now this one I can see this side 4 carbons are there, so let me make this is a parent compound. Parent माने के main chain, ये हमारा ब्रांच हो गया, n ethyl butane 1 amine, so it's a n ethyl butane 1 amine. See, n has nothing more than the position, वो एक पोजीशन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक ब्रांच लगा हुआ है, उसके लिए हमने नाइट्रोजन को n बोल दिया, उसको नंबर तो दे नहीं सकते थे, इसके लिए उसको n बोल दिया है, बस इतना ही है उसका महत्व। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरफ और इस तरफ छोटे चेन्स है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। इस ब्रांच को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज इथाइल। आइसोप्रोपाइल का आई, इथाइल का ई, अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा। यस, एंड इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल एंड ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन के 1 पे अमाइन है, इजंट इट? वो हो गया। वन मोर, ये वाला कंपाउंड, यस, ये ऐसे हो जाएगा एन इथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन, एन इथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। इज दैट क्लियर? अमाइन इज इम्पोर्टेंट, ये 4 लेस इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अमाइन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अंडरस्टूड? नाइट्राइल, okay, now listen. नाइट्राइल सेक्शन से लेके यहाँ तक के 3 that will club with the next session, not right now because the time is I think 10 minutes left. Okay, now what is more important, अपने लिखने के बाद what is more important what we discuss, कि only collecting the knowledge is not sufficient. Always I am telling you, only collecting knowledge is not sufficient unless you put in practice. You will not be able to memorize this thing, है ना? And this is mostly once a norm is understand, you can apply wherever you want. But उसके लिए प्रैक्टिस देना चाहिए आपको, और प्रैक्टिस के लिए नॉर्म क्या है? प्रैक्टिस का भी एक रूल है कि all the whatever you studied today,
जितना भी आपने लर्न किया है उसके आप नए 10 कंपाउंड्स खुद से बनाओ. यू प्रिपेयर randomly 10 compounds of each functional group you studied today. That is your practice. Okay, make a 10 random new compounds. कैसे बनाना है? बॉन्ड लाइन कुछ भी बना दो. ओके, यहाँ पे ग्रुप लगा दो और फिर उसका नाम करो. जब आप बना रहे हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या तो स्ट्रक्चर्स, यू डोंट हैव टू थिंक कि व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग. बट जब आप नाम दे रहे हो तब आपको थिंक करना है कि आप क्या नाम दोगे. ओके, अंडरस्टूड? यू डोंट हैव टू कीप अ लॉजिक कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग. जस्ट प्रिपेयर 1 2 3 फटाफट से बना दो, है ना. एंड देन when you are naming, then you have to be conscious and name. That is the rule. So 10 compounds each functional group till studied today. Okay, forget about A and E9. इनसे बनाओ अल्कोहल, हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सेशन मत ले जाना. Just try to make the simplest one. Okay, and this one is you can make as many complex compounds जितना भी आप बनाना चाहो. Correct? So here we stop the session. Okay, the recording will be available and do more practice. Thank you all. Online students may. Thank you, sir. Thank you, beta. Bye. Bye, sir. Okay.